Good morning all of you. Welcome in GK class. Student, in today's class we will discuss or we revise our chapter 3 animals and their young ones. Student, as human beings, animals also their young ones, and related to this topic some questions are given and we have to give the answers. Answer the following question using the help box. First question is, what is the young ones of a frog called? Young ones यानी frog का जो young ones होता है बेटा वो क्या कहलाता है? क्या होता है frog का young ones? Tadpole. क्या होता है? Tadpole. तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे animals और यहाँ पर उनके young ones. Okay? So let's write. So first animal है हमारा frog और इसका जो young one होता है वो होता है tadpole. 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 Now second question, what is the young one of cow called? Cow का young one होता है बेटा calf. So cow and cow का young one है आपका calf. Now question third, what is the young one of a lion called? Lion का जो young one होता है वो होता है cub. Lion. And lion young one is cub. Now next one, what is the young one of a of a horse called? Horse का जो young one होता है वो होता है बेटा foal. HORSE and FOAL. Foal. And what is the young one of a dog called? Dog का young one कौन होता है बेटा? Puppy. So dog young one is puppy. 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 And what is the young one of a cat called? Cat का young one होता है kitten. Sorry. What is the young one of a cat called? Kitten. KITTEN. So let's write cat, and cat's young one is kitten. And फिर है आपका what is the young one of a hen called? Hen का young one होता है chick. So let's write hen, and hen का young one है आपका chick. CHICK, chick. And last है what is the young one of a sheep called? Sheep का young one होता है lamb. SHEEP. sheep का होता है LAMB, lamb. Okay? So this is our chapter 3, animals and their young ones. Now let's revise chapter 4. Now chapter 4 is play with alphabet. Okay students? So let's see what's the exercise. Arrange the following words in an alphabetical order. So firstly you should know what is the alphabetical order. Student, alphabetical order or ABC order is a method in which terms, words or names are arranged in the same sequence as the letter of the alphabet. जिस तरह से अल्फ़ाबेट में लेटर अरेंज होते हैं A से A to Z, उसी तरह से हम लोगों को वर्ड्स को यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो फर्स्ट है आपका देखिए वाटरमेलन, गुआवा, पाइनएप्पल, kiwi and apple. And what's the correct alphabetical order is? Let's write. देखिए first apple, then guava, then है आपका kiwi, then pineapple, and लास्ट है आपका वाटरमेलन. ओके, फिर है आपका सेकंड है आपका स्नेक, कैमल,
monkey, bear and rabbit. And what's the correct alphabetical order is? Let's write. First आएगा आपका bear, then है बेटा आपका camel, then monkey, next rabbit और लास्ट में क्या आएगा? स्नेक, SNAKE, snake. Okay, so what's the correct order? Bear, camel, monkey, rabbit and snake. Now third is yellow, blue, green, violet and red. And what's the correct alphabetical order is? देखिए फर्स्ट आएगा B से blue, then green, then red, then violet and लास्ट में आएगा बेटा आपका येलो. ओके, नाउ फोर्थ इज whale, octopus, dolphin, turtle and seahorse. And what is the correct ABC order is? First dolphin, then octopus, then seahorse, then turtle और लास्ट में आपका आएगा बेटा whale. ओके, नेक्स्ट आपका है नोटबुक, इरेजर, पेंसिल, टेक्स्ट बुक एंड स्केल. एंड व्हाट्स द करेक्ट ABC order is? फर्स्ट इरेजर, फिर है नोटबुक, देन पेंसिल, देन स्केल एंड लास्ट में है टेक्स्ट बुक, TEXT टेक्स्ट एंड BOOK बुक. नाउ 6 नंबर पे है बेटा आपका एरोप्लेन, बाइक, स्कूटर, हेलीकॉप्टर एंड कार. एंड लेट्स राइट द करेक्ट ABC ऑर्डर. फर्स्ट एरोप्लेन, then bike, then car, then helicopter और लास्ट में आपका आएगा स्कूटर. ओके, फिर है 7 नंबर पर प्लेट. नाउ 7 नंबर प्लेट, spoon, fork, knife and glass. Let's write correct alphabetical order. फर्स्ट 7 नंबर पे है, इसमें फर्स्ट आपका आएगा fork, आफ्टर दैट ग्लास, देन बेटा नाइफ, उसके बाद आएगा आपका प्लेट एंड लास्ट में आएगी स्पून. ओके, एंड 8th नंबर पर है आपका रेन, क्लाउड्स, स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड हेल. एंड लेट्स राइट द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर. 8th नंबर फर्स्ट आएगा क्लाउड्स, आफ्टर दैट हेल, then lightning, clouds, hail, lightning, rain and last में storm. Okay, अब है 9th नंबर. Here are some vegetable names given: brinjal, pumpkin, ladyfinger,
cabbage and tomato. And let's write the correct alphabetical order beta. First है brinjal, after that cabbage, then है lady finger, after that pumpkin, and last आएगा टमाटो, TOMATO, टमाटो. ओके. एंड इसमें लास्ट आपको दिया है मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड कज़न. सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फर्स्ट आएगा ब्रदर, बी के बाद ब्रदर के बाद कज़न, देन फादर, आफ्टर दैट मदर, एंड लास्ट में आएगा बेटा सिस्टर. सो डियर किड्स, दिस 10 series are given of words and we have to arrange in alphabetical order. So we revise this. Hope so you understood this topic, how to we arrange words in alphabetical order according to their ABC order. Okay, in as a sequence in given in the alphabet A to Z. Okay, now let's see next topic, arrange the following in the proper sequence. Beta, in this page in questions 4 options are given A, B, C, D and we have to arrange these all in a proper sequence. So let's see. देखिए क्वेश्चन 1, A healthy, wealthy and wise. फिर है सेकंड and early to rise. C है makes a man and D है early to bed. So what's the correct? आपने you have to listen this poem ना. What's the correct? Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. What's correct order? Repeat again. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, wise. So what's the correct order? Question 1 and answer is first G, then B, then C and then A. Okay, and it's the third option. So third option is correct. Now question second, what's given? Let's see. Walking, creeping, crawling and standing. Okay, देखिए let's see. Here are one child given and we have to see according to this what's the correct sequence. So first when a baby born, then first what firstly he learn or she learn? Firstly he learn creeping, then crawling, then standing and last में walking. Okay, तो first creeping यानी B options, then crawling C option, then standing D option and last A walking. So answers का option is B, then C, then D and then A and second option is correct. Now question 3, let's see. Here are one house given and we have to, according to this house we have to arrange these words in a proper sequence. So A door, B lock, C key and D house. So what's the correct order? Here key, lock, okay, after that door, house. हमें जो क्या करेंगे, पहले हम लोग की लेंगे, देन लॉक को खोलेंगे, देन डोर ओपन करेंगे एंड आफ्टर दैट हाउस में एंट्री करेंगे. ओके, तो हमारे पास की है, हमने डोर को ओपन किया,
सॉरी हमारे पास की है, हमने लॉक को ओपन किया, देन डोर को ओपन किया एंड देन हाउस में एंट्री हुई. तो व्हाट्स द करेक्ट ऑर्डर? सी यानी की, बी लॉक, देन ए डोर एंड डी हाउस. And here our first option is correct. Now question 4 is beta. Here are one. Why it is something and we have to arrange these words in a proper sequence. Okay. देखिए A है cook, B wash, C eat and D cut. तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे? उसको खाएंगे, ईट करेंगे, कट करेंगे, कुक करेंगे, वॉश करेंगे. यस टेल मी. फर्स्टली वी शुड द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वॉश, आफ्टर दैट कट, देन कुक एंड आफ्टर दैट लास्ट में ईट. तो फर्स्ट वॉश, देन कट, देन कुक एंड लास्ट ईट. सो व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन? बी वॉश, D cut, A cook and C eat. And here our second option is correct. Okay students, so today we revise our chapter 3 and chapter 4. Hope so you understood these both chapters. Better revise these topics from the book. And if you don't make GK notebook, firstly we have done we revised chapter 1 and 2 and I have given the worksheet also, and we have done worksheet in that one notebook. But maybe some student didn't make the GK notebook, so please students make a new notebook of GK, okay, and do all the worksheets in your GK notebook. So I am also today I will also give you one worksheet and you will be doing this worksheet in your proper GK notebook. Okay. Thank you. Bye bye. Bye.